Hello everyone. Today I'm going to teach you about the lesson from the Vistas book, first lesson, the third level, written by Jack Finney. So what is all about the third level? Third level is a story about the guy named Charlie. Charlie is totally unhappy about his present life. He want to escape from his reality, this real world. Everything is harsh around him. He want to escape from that world that really doesn't exist. This it is in the past, and he is making all of this from his imagination. This is a psychological aspect that is shown in the lesson, how one turns from one reality and making and bringing the events from the other things for the sake of happiness, to show the difference between what it will be the and what was the happy life and what was the good people, and now what is the reality and how the things change in the real world where he actually lives in. So let's look how the things unfold during the lesson. I'm reading one by one each line. The first question that the writer asks from the reader is, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? Is this happens in your all the lives? Think about it. Okay. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven, and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. Okay, what is this he is talking about? Our narrator. Who is the narrator? We will find later in our lesson. Charlie. Charlie is describing all these events in his life, that in the New York Grand Central Railway Station there are only two railroads and there is timetable according to that. But I say there are three. वो कह रहा है कि वहाँ पे तीन है because I have been on the third level of Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. कहता कि मैं वहाँ गया हूँ. I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. उसके दोस्त को क्या लगता है कि ऐसा नहीं है, बट चार्ली किस चीज़ पे इंसिस्ट करता रहता है कि वहाँ पे एक थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल पे. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. कौन कहता है कि तुम खुश नहीं हो? सैम, उसका दोस्त है सैम साइकाइट्रिस्ट, वो कहता है कि तुम खुश नहीं हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. चार्ली कहता है कि जो हमारा आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, ओके, ऑल द थिंग्स, एंड आई जस्ट वांट टू एस्केप. देखो ये खुद से ही बोल रहा है कि मैं ये सब इनसिक्योरिटी से परेशान हो गया हूँ, ये सब फियर, ये वॉर, ये सब से मैं भागना चाहता हूँ, मैं रेस्ट पे जाना चाहता हूँ. ठीक है, भाग दौड़ वो डेली अपने काम से, घर से, सब वर्क से वो परेशान हो चुका है, वो इन सब से एस्केप चाहता है. In every sense, this is a existential text, a psychological reading of something. Okay, our author want us to interpret things according to our uh, reading, what we exert, what we interpret from the this character, how we deal with this character. Yes, but that is the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points out to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. देखो सबसे बड़ी चीज़ जिसे चार्ली हेल्प होती है इस सब से रिफ्यूज़ के लिए और ये सब रियलिटी से एस्केप होने के लिए, क्या? उसकी एक परमानेंट हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. Yes,
आगे वो जस्टिफाई भी करता है, डिफेंड करता है अपने आप को कि मेरी जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट है ये कुछ ख़राब नहीं है, लोगों को ख़राब लगती है। और वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से एस्केप कर रहे हो। आगे देखो वो क्या कहता है कि वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। वो कहता है कि मेरे दादाजी भी ये सब करते थे स्टैम्प कलेक्टिंग, वो तो किसी रियलिटी से नहीं भाग रहे थे। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। वो कहते हैं कि सब कुछ सही था। नेक्स्ट, इन हिज डे, उनके दिनों में, ओके, किन के दिनों में, उसके ग्रैंडफादर के डेज में। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, blocks of four of practically every US issue, first day covers and so on. What he defended himself like President Roosevelt collected stamps too, you know. अब वो किन को लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को लेके आ रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो लोग भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो कहाँ से आ गया है अपना टॉपिक चेंज करके ग्रैंड सेंट्रल पे वापस से। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। ये कहते हैं कि मैं काम से निकल रहा था अपने घर पे जाने के लिए, तो मैंने क्या लिया, बस की बजाय मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ बढ़ गया। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और कहते कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम, दिस इज़ द नेम गिवन हेयर, चार्ली, 31 years old एंड आई वॉज वियरिंग ए 10। अब वो अपने आप को बता रहा है कि मैं कैसी पर्सनैलिटी हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो। आई वॉज वियरिंग ए 10 gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked like just me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home for to Louisa, my वाइफ। कहते कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मल कपड़े पहन रहा हूँ जो और लोगों ने पहने हुए हैं, उन जैसा ही दिखता हूँ। मैं किसी चीज़ से नहीं भाग रहा हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं किसी चीज़ से भाग रहा हूँ और भागने के लिए मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ के पास, लुइज़ा के पास। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। कहता है कि मैं कहाँ पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल के फर्स्ट लेवल पे आ चुका हूँ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th century। फर्स्ट लेवल पे कैसी ट्रेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है वो, जैसी आज के टाइम में है, 20th century में जैसी है डेवलप्ड ट्रेन्स है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। अब वो कौन से लेवल पे आ गया, सेकेंड लेवल पे। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लेवल लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग टू द सबवे एंड गोट लॉस्ट। अब यहाँ क्या है, सब अर्बन ट्रेन्स है जो छोटे रास्तों पे जाती है। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 of times। कहते हैं कि ऐसा नहीं कि पहली बार मैं ग्रैंड सेंट्रल पे गया हूँ, मैं 100 of times वहाँ जा चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवे, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। पर मैं हमेशा नए दरवाजे से बाहर निकलता हूँ, नए कॉरिडोर से बाहर निकलता हूँ। वंस आई गोट इन टू द टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट। पहले वो कहाँ से कह रहा है कि कहाँ से निकला, रूजवेल्ट होटल से। देन आई कम came up in an office building of 46 street 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree। ये कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसकी रूट्स फैलती जा रही है, कॉरिडोर्स बढ़ती जा रही हैं। ओके, क्या चीज़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, चार्ली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो अपने मेंटल इश्यूज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये सारी इनसिक्योरिटीज़, फियर उसके माइंड में ये सब बढ़ता जा रहा है। और वो किस चीज़ को एज ए कंपेयर करके दिखा रहा है, एज ए मेटाफर, एज ए पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, ग्रैंड सेंट्रल को यूज़ कर रहा है। यस, द थर्ड पेज। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on the way to Times Square। ये कहता है कि कोई एक ऐसी टनल है जिसको कोई नहीं जानता, जो कहाँ डायरेक्ट निकलती है, टाइम स्क्वायर में एंड सेंट्रल पार्क में। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल दो द ईयर ग्रैंड सेंट्रल
has been an exit, a way to escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. कहते कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। चार्ली एक मॉडर्न वर्ल्ड की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब डिस्टर्ब्ड हैं, सब परेशान हो चुके हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ से, इनसिक्योरिटीज़ से, ओके, जॉब से, सब एस्केप चाहते हैं। चार्ली को ऐसा लगता है कि सब मेरे जैसे ही है। The corridor I began, angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब वो कहीं किसी एक रास्ते की बात कर रहा है कि मुझे लगा पहले वो गलत था बट मैं चलता रहा. I could do here was the empty sound of my own footsteps. कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मेरे footsteps की आवाज़ आ रही थी. And I didn't pass a soul. A soul means a person. Then I heard that sort of hollow roar ahead. It means open space, people talking. कहते कि अब लोगों की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. कहाँ पहुँच गया अब चार्ली? कहता कि मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया. एक्चुअल में what is this all third level? This is his imagination. The third level never exists in the real world. This is whole imagination of Charlie himself, how he created a new world, a peaceful world for himself to escape from the harsh reality. Yes, for just a moment I thought I was back on the second level. उसको क्या लगा? बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें लगी जो बिल्कुल सेकंड लेवल पे थी. बट वहाँ पे क्या डिफरेंस था? फ्यूअर टिकट विंडोज़ थी एंड ट्रेन गेट्स एंड द मैन इन द बूथ वोर. अब वो आज जो आदमी बूथ पे बैठा उसको बता रहा है कि वो ग्रीन शेड ब्लैक स्लीव उसने प्रोटेक्टर्स पहने थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट्स भी वहाँ फ्लिकर कर रही थी, कभी ऑन हो रही थी कभी ऑफ हो रही थी. देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. गैस लाइट्स इसके मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं थे. गैस लाइट्स पुराने पास्ट की वो टाइम ट्रेवल के हिसाब से वो सारी चीज़ें बता रहा है. Yes, this text is also a kind of science fiction, half science fiction you can say, the time travel of traveling to the past happiness of the Charlie, the character. There were brass buttons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. कहते कि वहाँ क्या था? ब्रास स्पिटन्स थे. फिर मैंने कुछ देखा. क्या देखा उसने? एक आदमी को वो क्या कर रहा था? ही वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. कि वो उसने अपनी इतनी ध्यान से अपनी वॉच को देख रहा था. ही वोर अ डर्बी हैट. अब वो उस आदमी का बता रहा है कि उसने क्या क्या पहना था. एक हैट, एक बहुत हैंडल बार मुस्टैच थी उसकी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरीबडी इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. अब वो बिल्कुल पास्ट में जा चुका. उसको नहीं पता कि एग्जैक्ट ईयर एग्जैक्ट डेट क्या है, बट वो क्या अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या है वो 1890 समथिंग है. आई नेवर सो मैनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेश इन माई लाइफ. अ वुमन, अब वो एक औरत को डिस्क्राइब कर रहा है. अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड skirts of the top of her high buttoned shoes. Back of her, out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and eaves locomotive with a funnel shaped stack. पहले लेडी के बारे में बता रहा है, फिर उसकी कहाँ ध्यान जाता है? एक स्टीम इंजन की तरफ. ठीक है, स्टीम इंजन का ये नाम है. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय. अब कहाँ जाता है वो? एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है.
फिर वहाँ पे वो क्या देखता है, किस न्यूज़पेपर का नाम पढ़ता है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। अब वो कहता है कि वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर का नाम है वो तो आया ही नहीं बहुत सालों से। तभी उसे क्या पता चलता है, द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। 1890s में कौन प्रेसिडेंट था, मिस्टर प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. This is the time where he traveled in his imagination, in his mind. I turned towards the ticket window, knowing that there on the third level at Grand Central I could buy tickets that would make Louisa and me anywhere in the US वी वांटेड टू गो। कहता है कि मैं कितनी ही टिकट खरीद सकता हूँ कहीं भी घूमने के लिए। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू, कहाँ जाना चाहता है, गेल्सबर्ग इलियनॉइस। दिस इज़ द मोस्ट हैप्पी प्लेस व्हाट चार्ली डिस्क्राइब्स इन this lesson in his imagination. Okay, yes, look at the new events. Have you ever been there? It is a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of trees. क्या डिस्क्राइब कर रहा है? This is a real comparison between Galesburg and New York City. New York City is full of apartments. There is everything uh, like crowded, but गेल्सबर्ग में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे क्या है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स हैं और बहुत सारे पेड़ हैं। क्या है, इन 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women wearing palm leaf fans with fireflies all around in a peaceful world. सीधी सीधी बात, चार्ली यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है एक पीसफुल वर्ल्ड की, एक जगह की, गेल्सबर्ग की, एंड ही डिस्क्राइब्स in the next pages that he also went to school there, his grandfather used to live there. Okay, that was his happy place. Okay, this leaves a imprint on his mind. That's why he created this new world out of there and compared it with New York. New York that is filled with harsh reality. Okay. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted two tickets for that. Yes, next page. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband but he figured, okay, this is about how he describing the clerk and money and how he doesn't uh, accept his money. Then the next day Charlie went to the bank and he withdraws $300 to get the currency of that time of 1894, to get the ticket for himself and his wife Louisa to go to Galesburg, to his happy place. Yes, and that's was that. I left the same way I came. कहाँ से चला गया, क्या इंसिडेंट हुआ, वो डर गया, घबरा गया क्योंकि उसकी मनी क्या है, वो आज की मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी है उसके पास, वो वहाँ पे चली नहीं, वहाँ पे क्लर्क ने मना कर दिया। कहता कि मैं वहाँ भी, चाहे वो 1894 है पर मैं जेल में नहीं जाना चाहता। फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had. कहता मेरे पास यही थे, किस में चेंज कराने के लिए, ओल्ड करेंसी में चेंज कराने के लिए। बट द डीलर, टू चेंज टू द ओल्ड करेंसी आपको क्या चाहिए होता है, टू पे अ प्रीमियम। जब आप करेंसी एक्सचेंज होता है तो आप ऊपर थोड़े पैसे लगते हैं। ही इज़ डिस्क्राइबिंग ऑल द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कलेक्टिंग द मनी।
My $300 bought less than 200 in old style bills. 300 के कितने मिले? 200. But I didn't care. Eggs were 13 cent a dozen in. कहते कि तब उस वक्त एग्स का क्या प्राइस होता था? 13 सेंट्स अ डजन. 12 अंडे 13 सेंट्स में मिल जाते थे. But I have never again found the corridor that leads to the third level. अब वो कह रहे कि मैं पहले जिस रास्ते से गया था, जिस कॉरिडोर से गया था ग्रैंड सेंट्रल के, वो मुझे मिला ही नहीं. ओके. और उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश भी की. लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर all this and did not want me to look on the third level anymore, and after a while I stopped and I went back to my stamps. कहते कि मैंने लुइजा से बात की और उसने क्या कहा कि तुम छोड़ दो थर्ड लेवल के बारे में सोचना या वहाँ जाना. तो उसने क्या किया, मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन पे फिर से आ गया. माई फ्रेंड सैम वेनर disappeared. वो कहीं गायब हो गया. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. क्या कह रहा है यहाँ पे चार्ली कि क्या उसको लगता है कि सैम भी एक थर्ड लेवल की उसमें है, डिस्कवरी में है? क्या सैम गेल्सबर्ग में चला गया है? चार्ली पूरी तरह से कह रहा है कि हाँ, सैम चला गया है यहाँ से. सैम को भी एक हैप्पी प्लेस चाहिए और मैंने उसको अपने हैप्पी प्लेस के बारे में बताया है. मुझे लगता है सैम भी 1894 में वापस चला गया है. Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know that what a first day cover is? Now, here Charlie is talking about the stamp collection, how people used to collect the stamp and post oneself and themselves and get surprise and then get the date of that stamp collecting thing, all of this custom. Yes, this is the stamp collecting thing. Yes, here he is talking about the postmarks and how they opened and a blank paper. Okay. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. उसको क्या मिलता है अपने स्टैम्प कलेक्शन में? कोई एक ऐसा कवर मिलता है, एक ऐसा एनवेलप मिलता है जो उसने नहीं सोचा था. बट देयर इट वॉज, बट वो वहाँ था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. वो कहता है कि किसी ने मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग में वहाँ पे इसको मेल किया था. That's what the address on the envelope said, and the date is July 18, 1894. The stamp was a 6 cent. उस envelope पे क्या stamp थी? 6 cent की थी. Dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. देखो, एक एनवेलप है, उसको लगता है किसी ने वहाँ उसको मिला और किसी ने वो एनवेलप उसके दादाजी को मेल किया था और आज तक उसको किसी ने ओपन नहीं किया था. और जब चार्ली ओपन करता है तो उसको क्या मिलता है? This is the address, the date, and this is written for Charlie. कौन कह रहा है ये बातें? I go to wishing that you were right. Then I go to believing you were right. कि तुम जो कह रहे थे वो सब सच है, सब सही है. And Charlie, it's true. ये बिल्कुल सच है. I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at Dale someone is playing a piano. वो क्या कह रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं 2 हफ्तों से यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है. और क्या गाना गा रहे हैं? सीइंग नेली होम, ये सॉन्ग है. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर लेमनॉइड. मुझे किसी ने इनवाइट किया लेमनॉइड पे. कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ चार्ली एंड लुइजा. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल.
ढूंढते रहना जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. Or the note is signed same. So here is everything mind bursting. How can somebody write the dates, and how can somebody mail to Charlie's granddad uh, in the past? How Sam is describing all of these things. Is Sam is also disturbed? Is he in the third level of depression? Is he also needed the psychiatrist help, or all of these Sam created to get his friend back? This is totally an open-ended question for all of you readers, you all students. Think about it. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to send him to the nice little hay, feed and grain business. चार्ली को क्या पता चला कि सैम ने $800 निकाले हैं, वो भी किस में चेंज करा लिए, ओल्ड करेंसी में, और वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता था. ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, एंड ही सर्टेनली कैनॉट बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. पुराना बिजनेस कौन सा था? साइकोलॉजी का. ही वॉज साइकाइट्रिस्ट, बट उसका नया बिजनेस कौन सा हो गया है अब? वो फीड हे एंड ग्रेन्स ये सब बिजनेस में जाना चाहता था एज ए फार्मर. Note in Galesburg, Illinois in 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist. Charlie is also questioning his friend कि why he is in 1894, why he is in Galesburg, why he um, changed and bought $800 and change his currency, why he wants to set up new business. All of these um everything changed the mindset of Charlie and also about us. So here are two interpretations that according to me is making from the lesson. First, this is a existentialist psychoanalytical and a time traveler science fiction work. What this explains to us: Charlie represents all the New York people, all the modern world realities, and want to escape to the peaceful world that had existed in back in 1890s. And there was a happy place for Charlie, that is Galesburg. He always wanted to be there. Okay, and all of these events he narrated to his friend Sam, his psychiatrist. Is Sam is also that disturbed that he also wanted to the happy place of Charlie's, or Sam is helping his friend Charlie to get back him to the real world, to get back him to the harsh reality again? Think about it. This is the wrap of our lesson. Thank you.